Hello students, class 10, chapter 6, biosection, life processes. So it is clear from the name of the chapter that these are the processes which are essential for the sustenance of life. So now we are going through the definitions, whatever we have been given. The very first, the process which maintain body function and necessary for survival are called the life processes. So these are the processes जो बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखते हैं एंड विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव. वो सारे प्रोसेसेस जो एक साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है जिंदा रहने के लिए एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी are called life processes and which are necessary, which is performed by the organisms to maintain the body also. So examples हैं nutrition. The very first is nutrition. Nutrition means just uh, the intake of nutrients in the form of food. Then respiration. Respiration is to obtain the energy from the food or nutrients by the oxidation. Next, third है transportation. So just to locate the or transport the nutrients or energy to each part of the body. And excretion, this is the process by which the waste material which is left after the absorption of the nutrients excrete through the body. We excrete from the body. So in detail we are going to discuss these examples or these processes. The very first is nutrition. What is nutrition? The process of taking nutrients from the food is called nutrition. So the body of every living organism needs the nutrients, and the process by which the nutrients is obtained in the form of food is called nutrition. ये वो process है जिससे हम food से nutrients obtain करते हैं. The term nutrients, which is the new one here, nutrients होते क्या क्या हैं? Nutrients are carbohydrates, fats, proteins, water, vitamins, minerals, etc. These all nutrients has the different applications. For example, carbohydrates, which provide the energy rich foods. These are fats, proteins. Protein is known as the building material. Water, which is very much necessary for any organism, and vitamins, which escape you from the or which protect you from the diseases, and minerals, etc. Now, there are two types of nutritions, modes of nutrition. And next topic, the very first is autotrophic nutrition. What do you mean by autotrophic nutrition? Auto means itself. So, autotrophic nutrition, it is the process in which the organism produces their food from the simple inorganic materials, that is water and carbon dioxide, in the presence of sunlight. So autotrophs, for example plants are also known as autotrophs because they have the tendency to prepare or synthesize their own food in the presence of sunlight and chlorophyll by using the inorganic material water and CO2 water and CO2 and form the food or form the product as a glucose which is organic. The next one is heterotrophic nutrition. What is heterotrophic nutrition? In this organism depends upon the organism for the food to survive. So heterotrophs are not able to synthesize their own food. They would depend upon the autotrophs or plants and some blue green algae which has tendency to prepare their food. Okay, for example, human beings, amoeba, etc.
So how would the plants prepare their food? That is the very first nutrition in plants. So the process by which the green plants synthesize their food is called photosynthesis. Now we are going to explain this now in detail. The process in which the green plants convert simple inorganic materials, that is H2O and carbon dioxide, into complex organic food material, that is glucose, in the presence of chlorophyll and sunlight. ओके तो ये वो प्रोसेस है जिससे कार्बन जिससे आपके पास ग्रीन प्लांट्स वाटर और CO2 को यूज़ करके विच आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ये क्लोरोफिल एक नई टर्म है. व्हाट इज क्लोरोफिल? इट इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द leaves of the plants. So the chemical equation for the photosynthesis, that is carbon dioxide, CO2 plus H2O, sunlight and a green color pigment as a catalyst, that is chlorophyll. यहाँ बन जाता है glucose and oxygen liberate. Now you may balance it. This would be balanced by multiplying 6 over here, 6 over here and 6 over here. Now whatever the steps are followed in the photosynthesis we are going to discuss over here. The very first, absorption of light energy by the chlorophyll. This green color pigment chlorophyll, which is present in the leaves of the plants, absorb the sunlight. Second step, conversion of light energy to the chemical energy. Then light energy will be converted into chemical energy, and this is used to split the water into its constituent gases, that is hydrogen and oxygen. And the next step, reduction of carbon dioxide to the carbohydrate. We know that what is the reduction? That is the removal of oxidation, and addition of hydrogen is called reduction. In the very first chapter we have studied about. So reduction होती है इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में. So this is your photosynthesis, which is performed by the green plants, which are called autotrophs. So the next one is chloroplast here. These are the small organelles found in the plant cell. It contains chlorophyll, which absorb the sunlight for the photosynthesis. सबसे पहले if you are going to see the section of this leaf, सबसे ऊपर वाली आपके पास जो लेयर है that is called क्यूटाइल. उसके बाद आपके पास ये आता है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस और इसमें ये आपके पास ग्रीन कलर के पिगमेंट्स रहते हैं, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट. और इस क्लोरोप्लास्ट में आपके पास ये ग्रीन कलर किस वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll. Okay, so this is very much necessary for the process of photosynthesis. After that, nutrition in humans. Nutrition in humans. First of all, you just have to go through the diagrams. The very first is mouth there. Then this is the mouth. And then in mouth, we are looking some spots over there which represent the salivary glands, जो saliva secrete करती है. फाइन, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट ईसोफेगस, जिसको आप फूड पाइप भी बोल देते हैं, जिससे फूड स्टमक में जाता है. एंड दिस इज योर स्टमक. ओके, दिस इज योर ईसोफेगस, this is your stomach, this is your liver. This is known as the largest gland of the uh, human body. This is your gallbladder, which contain bile juices and bile salts. After that, this yellowish part represent the pancreas, which secretes some enzymes and one hormone too. Then small intestine, this one small intestine, and then
दिस वन इज द लार्जर इंटेस्टाइन. यहाँ आपके पास अपेंडिक्स है, and here we have rectum and anus, through which the waste material excrete from the body. So uh, nutrition in human, the very first, mouth. So mouth, through mouth we intake the food. Teeth are used to break the food. Then tongue is used to taste and mixing of the food or rolling of the food. The next one is salivary glands, which are present in the mouth and which produces saliva. अब saliva में क्या होता है? Saliva contain enzyme, name is salivary amylase. और ये क्या करता है? That break down the starch, that is food. वो फूड को ब्रेक डाउन करता है, फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. तो ये रिएक्शन है आपके पास, स्टार्च प्लस salivary amylase convert into sugar. Okay, the next one is esophagus, food pipe जिसको आप बोलते हैं. Esophagus, taking food from the mouth to the stomach by the peristaltic movements. Esophagus क्या करता है आपके पास, ये जो फूड पाइप है ये फूड को माउथ से स्टमक की तरफ लेके जाता है. Here we got a new word, that is peristaltic movements. Peristaltic movements आपके पास कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि अगर ये फूड पाइप बिल्कुल फ्लैट होता तो फूड कैन बी स्टक ओवर देयर. लेकिन जैसे आपने बेसन की पाइप देख रखी है तो वो एक स्पिरल टाइप की होती है, एक स्प्रिंग की तरह होती है. अगर वहाँ कुछ अटक जाए तो आप उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं एंड द थिंग विल कम आउट. सो यू नो दैट, यू कैन ऑब्जर्व दिस. जब आप स्वेलो करते हैं तो आप थोड़ा सा जोर लगाते हैं जब स्वेलो करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर आप रिलैक्स होते हैं तो वो फूड आपका नीचे की तरफ पुश होता है. फिर आप थोड़ा सा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं. By this process the food will go in the stomach without stucking anywhere. So uh, next is stomach. Stomach is a large organ and it expands when the food enters in it. So this is like a bag and large organ of the human body, and it has the tendency to expand. जैसे आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो भी आ जाता है, you would feel a little bit. So means the stomach has the tendency of expansion. So because of its expansion it can also mix up the foods. The next one is gastric glands. Stomach contain the gastric glands. Stomach में gastric glands होती हैं which releases the gastric juices, जो gastric juices को release करती हैं for the digestion of the food. और ये जो gastric juices हैं, these contains three things. The number one is HCl, dilute hydrochloric acid. Yeah, hydrochloric acid we can say that. Pepsin, this is the enzyme, and mucus. तो आप ध्यान में रखेंगे that gastric juices secreted by the gastric glands in the stomach, and it secretes, gastric gland secretes the gastric juices which contain HCl, pepsin and mucus. Now what are their functions? First of all, HCl. HCl makes the medium acidic, which is used to kill the harmful bacteria of the food, and also facilitate the work of the pepsin because that is quite comfortable in acidic medium. The next one is pepsin. Pepsin break down the proteins into the amino acid. पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है. थर्ड वन इज म्यूकस. म्यूकस इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक. म्यूकस एक आपके पास सीक्रेट होता है स्टमक में which protect the inner lining of the stomach because HCl is going to be produced over there. HCl stomach की lining को harm कर सकता है. So to protect it from the HCl, mucus will be produced by stomach. Okay. The next is small intestine. स्टमक के बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. इट इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन. मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन.
It is the site of the complete digestion. And then liver is the largest gland of the human body. Liver produces the bile juices and bile salt. So here you have to learn that liver produces what, my dear? Liver produces bile juices and bile salts. Bile juices क्या करते हैं? Bile juices makes the food alkaline. जब स्टमक से फूड आएगा वहाँ HCl था, एसिडिक होगा, तो बाइल जूसेस इसको क्या करते हैं? अल्कलाइन बनाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, देन मेड इट अल्कलाइन. बाइल सॉल्ट आपके पास ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स. बाइल सॉल्ट्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में. ओके, this is called emulsification, and this process of the large fat globules into the small fat globules is called emulsification. Then gallbladder, here you have seen that here is the gallbladder. It store the bile juices and salts. ये जो bile juices हैं लीवर से कहाँ पे स्टोर रहते हैं? आपके पास गॉल ब्लैडर में. एंड देन एक होता है बाइल डक्ट. बाइल डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं एंड टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. आफ्टर दैट pancreas, here yellowish part will represent the pancreas. Pancreas secrete trypsin and lipase. Two enzymes हैं ये. There are two types of enzymes secreted by the pancreas. The very first trypsin. ट्राइप्सिन क्या करता है? जो पेप्सिन करता है वही ट्राइप्सिन करता है. ट्राइप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड. ट्राइप्सिन अमीनो एसिड में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है एज डन बाय द पेप्सिन. एंड लाइपेज ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइड फैट. जो आपके पास लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्टेड है उसको एमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड गिल्सरोल में. ओके, सो lipase break down the emulsified fats into fatty acid and glycerol. Next, starch converted into glucose, that is sugar. Fats, that is converted into fatty acid and glycerol, अभी हमने पढ़ा. And proteins by the action of pepsin and trypsin, that would be converted into amino acids. अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वी हैव अ विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं विच इंक्रीज द सरफेस एरिया एक्चुअली. सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें इस तरह की प्रोजेक्शंस होती विच आर नोन एज विलीज, जो सरफेस एरिया ऑफ absorption of food इंक्रीज कर देती है जिससे मोर फूड कैन बी absorbed. Now, villi, finger-like projection inside the small intestine. कैसी? Finger-like projections inside the small intestine. These increases the surface area of absorption. तो ये सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए इंक्रीज कर देती है. विली आर, और यहीं से जो भी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं ये विली आर सप्लाइड द फूड टू द ब्लड वेसल्स. और ये फूड को कहाँ पहुँचाती हैं? ब्लड वेसल्स तक. और ब्लड वेसल्स कहाँ पहुँचाते हैं? द होल बॉडी तक. देन द ब्लड वेसल्स टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ओके, आफ्टर दैट the rest of the unabsorbed food will go to the large intestine. So next is large intestine. The unabsorbed food sent to the long intestine, that is large intestine, where its wall absorb more water. तो यहाँ से absorption of water होता है and from this material, and some minerals are also absorbed in the large intestine, and rest of the material removed from the body by the anus. और जो बाकी आपके पास वेस्ट मटेरियल होता है that would be excrete or removed from the body by the anus. So life processes, here we have discussed about the nutrition types, discuss करी, nutrition in plants discuss किया, nutrition in humans discuss किया.
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।